हेलो। सो सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो रहा था और मैं उम्मीद कर रही हूँ अभी स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, थोड़ा देखते हैं। आई एम सो सॉरी टू बी लेट। ओके, बहुत बहुत माफ़ कीजिएगा। आई एम सो सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा था, पता नहीं इश्यू क्या था, पर अब शुरू हो गया तो ठीक है। सो सॉरी। सो हाउ आर यू गाइस, कैसे हैं सब? मैं तो अभी थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, स्ट्रेस हो गई थी कि क्यों शुरू नहीं हो रहा है। तो फिर बाद में मैं लोगों से पूछूंगी कि क्या गलत थी, बट आई एम हैप्पी, अभी तो शुरू हो गया। सो आप लोग कैसे हैं? सो कमेंट्स आए हुए थे, लुक्स लाइक समवन इज लेट। नो नहीं, मैं लेट नहीं हुई थी, ठीक से समय पर शुरू किया था, पर कुछ इश्यू चल रहा था। सो सॉरी। And I thought Japanese are punctual. Please don't kill me. It was a joke. Right. Japanese people are usually very punctual, but it's not always like that. मेरे बहुत दोस्त हैं जो पंक्चुअल नहीं होते हैं, समय पर नहीं आते हैं, तो इट्स नॉट ऑलवेज अ केस। पर आज तो मैं पंक्चुअली समय पर आई हुई थी, पर कुछ इश्यू चल रही थी, तो आई एम सो सॉरी। आगे जाके ऐसा नहीं होगा। दीदी तो आज लाइव नहीं आएगी क्या? नहीं, आ गई थी, सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो दिल्ली दीदी कल आ जाएंगे क्या? कल अभी शुरू हुआ है तो कल नहीं आऊँगी, फिर वेंसडे का आऊँगी, ठीक है? नो नीड टू बी सॉरी, नॉट एवरीवन नोज एवरी स्ट्रीम ऑफ देयर लाइफ। हाँ, थैंक यू so much for understanding. But it's not nice. I mean, you guys were waiting for me and I wanted to be on time, but there were some issues. I'm so sorry. Hi, hello, Renka ji. Hello, Bruce Lee. Thank you so much, guys, for coming to my stream every day. जोक था, ठीक है, वाइपर। ओके, सब लोग आ गए, बहुत बढ़िया। आज मैं बात करना चाहती थी जापानीज़ वर्क कल्चर के बारे में। आप लोग कभी मतलब जापान में काम करने को सोचा है क्या? नहीं, पता नहीं, बता दीजिए। आप लोगों को ऐसा कभी लगा कि चलो मैं भी जापान में काम करूँगा ऐसा? हाय रेंका दीदी, क्या प्रॉब्लम थी? एक्चुअली मुझे नहीं पता कि मैंने ठीक से शुरू किया था, पर वो यूट्यूब पे नहीं शुरू हुआ था। फिर से मैंने रिस्टार्ट कर लिया तो ठीक था, लेकिन बाद में थोड़ा पता लगाऊंगी कि असल में क्या प्रॉब्लम थी। सो आई एम सो सॉरी। कैसे हो दीदी? मैं ठीक हूँ। अभी थोड़ा सा स्ट्रेस पे बढ़ गई थी क्योंकि स्ट्रीम नहीं शुरू हो रही थी, लेकिन अभी ठीक है। और आप लोग थोड़ा समय पर, मतलब देर होने के बाद भी आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच you guys for all the patience you have. My punctuality is limited to reaching school at 7:59, 59, which is scheduled for 8 a.m. So who am I to comment on someone's punctuality? But 7:58 is still punctual, and 59 is still punctual. So you are punctual actually. जापान में मेडन का काम करना है, दिलवा दो। मेडन? मेडन क्या होता है? मेडन? बता दीजिए, मेडन का काम क्या होता है? मेरा इंग्लिश वोकैबुलरी जो है लिमिटेड है। सो मुझे नहीं पता, थोड़ा चेक करते हैं, ठीक है, 1 मिनट। मेडन An unmarried girl or young woman. What do you mean? An over in which no runs. I don't really understand, but let's see. Viper and Blue Sea out of context question. क्या मुझे थोड़ा सीरियस होना चाहिए डिस्कॉर्ड में? या out of context questions really. Okay. And I was camping the notification.
इंटरेस्टिंग। श्राइन मेडन, श्राइन पे जो होते हैं मेडन्स, आई थिंक यू कैन वर्क एज अ मेडन। सो वैसे आपको पता है कि न्यू ईयर इज कमिंग अप एंड देन इन न्यू ईयर सीजन्स वी कैन डू मेडन वाला पार्ट टाइम जॉब, ठीक है। सो ऑन ड्यूरिंग न्यू ईयर्स और टेम्पल में बहुत लोग आते हैं, और टेम्पल में मंदिरों में ऐसा है कि कुछ सुवीनिर्स वगैरह बेचते हैं ना, न्यू ईयर के कुछ चीज़ें हैं, कुछ खाना भी है। एंड देन इन जापान वी हैव दिस थिंग कॉल्ड ओमामोरी. Omamori is like a key holder kind of thingy, but inside there is जो पवित्र वाला पता नहीं कुछ चीज़ है, कागज़ है. So people buy omamori for good luck. So there is like a exam के लिए good luck वाला omamori है, कुछ वर्ल्ड पीस हेल्थ ऐसी चीज़ें ना मंदिर में बेची जाती है, और ये बेचते हैं मेडन वाला जो लोग हैं. सो न्यू ईयर में मंदिर में ऐसे कुछ मेडेंस पार्ट टाइम जॉब वाला मेडेंस हायर करते हैं, तो यू कैन प्रोबेबली जॉइन इट. और आजकल तो विदेशी लोग भी बहुत जापान आते हैं, न्यू ईयर्स को मनाते हैं. तो अगर आप लोगों को इंग्लिश आती है, कुछ जापानीज़ भी आती है, सो मे बी यू कैन गेट सम जॉब देयर, सो दैट माइट बी नाइस. ओके दीदी, अभी आप क्या कर रही हो? अभी तो मैं स्ट्रीमिंग कर रही हूँ. लेकिन आज कुछ शॉपिंग के लिए गई थी, थोड़ा घूमने के लिए गई थी अकेली बाहर, पर इतनी सर्दी है तो जल्दी वापस आ गई. तो अभी फिलहाल मुझे घर में ही रहना है, इतनी ठंड में मैं बाहर नहीं जाना चाहती. I asked my friend Rocky who lives in Japan and he said they are okay, mostly barely interact with me really. Are you talking about the maiden? Yeah, but part-time job wala maiden talk with the customers. So it's not really like, sacred people. They are actually, some of them are just part-time job. इतना सीरियस नहीं होना, ठीक. Anyway, so आज मैं कुछ जापान में काम करने के को बातें करना चाहती थी. So आपने कभी जापान में काम करने के लिए सोचा है कि नहीं, पता नहीं, पर मुझे लगता है दुनिया भर में ऐसा वो जो बिलीफ है कि जापानीज़ पीपल वर्क टू मच. लेकिन आजकल मुझे लगता है ये जो बात है वो सही नहीं है, मुझे लगता है. So according to the internet, Japan is not the hard-working country anymore. वो for example, Korean people work more than Japanese people. And पहले तो ऐसा होता था कि especially 30-20 years ago, Japanese companies were doing great. The Japanese economy was doing great. तो जितने ज़्यादा काम करेंगे उतना पैसे कमा पा रहे थे जापानीज़ कंपनीज़ में, ठीक है. और जब लोग ओवर टाइम करते हैं तो ज़्यादा पैसे भी आते थे, इसलिए लोगों को एक्चुअली पसंद था कि ज़्यादा काम करने के लिए. एंड देयर इज़ अ फेमस एडवर्टाइजमेंट. आप लोगों ने दंदरंग एनिमे देख रहे हैं क्या? उसी एनिमे के अंदर में ये एडवर्टाइजमेंट का गाना है, 24時間働けますかビジネスマンビジネスマン Japanese businessman. So this advertisement was very popular and it says, can you work 24 hours Japanese businessman. So ये गाना, this advertisement was very very popular in Japan, very very famous. And it says, it talks a lot about the Japanese work culture. So पहले 20-30 साल पहले जापानीज़ कंपनीज़ में ऐसा था कि मतलब 24 आवर्स काम कर रहे हैं, है ना. एंड दिस सॉन्ग वाज वेरी फेमस. अगर ये एडवर्टाइजमेंट आज के जापान में एयर किया जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा. हाँ, ऐसा
आजकल तो अच्छा नहीं माना जाता है इतना ज़्यादा काम करवाने के लिए, लेकिन पहले तो ये चलता था. So this song was also used in Dandadan anime. So if you watched it carefully, then you can listen to it in the anime as well. But the thing is, today's Japanese work culture is a little bit different, and a lot of companies actually follow the work, regulation. So 8-9 घंटे ही काम करने वाले बहुत है, मतलब mostly people can actually go home in decent time. So समय बदल गया है. There are some companies like startups में ज़्यादा काम किया जाता है, क्योंकि startup शुरुआत में companies में बहुत काम किया जाता है, या consulting firm, या foreign investing banking. Those are the very demanding jobs. But normally normal companies में इतना ज़्यादा काम नहीं किया जाता है. So I think there is this misconception that Japanese लोग बहुत काम करते हैं, या black companies बहुत है जो ज़्यादा काम करवाते हैं. पर आजकल तो मुझे लगता है कि कुछ बदल रहा है. Okay, before talking about foreigners working in Japan, I'm gonna read some comments. I'm talking about co-workers in a company. I asked my friend Rocky, who lives in Japan, and he said they are okay mostly, barely interact with me really. Okay. मुझे बस एक बार जापान में फोमर बनना है. आ जाओ, पहले आ जाओ. रिंका दीदी, आपका रियल नेम ही रिंका है? हाँ, मेरा नाम ही रेंका है. रियल नेम क्या होता है? Hey, what's the topic? Topic is about hard labor. बिहार का कंपटीशन नहीं. बिहार में ज़्यादा काम किया जाता है क्या? मुझे ये ज़्यादा नहीं पता है. Are the working hours more or less in Japan, रेंका जी? So definitely more, लेकिन पहले जैसा नहीं है. 20 साल पहले तो बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, और ये बात दुनिया भर में फैल गई. पर अभी तो इतना नहीं है. जापान में लेजीनेस कितना है? कैन इट कम्पीट विद इंडिया और US? लेजीनेस क्या होता है? पर जितना मुझे पता है उतना मैं बताऊंगी. आई थिंक जापानीज लोग नियम को पालन करने के लिए तो नंबर 1 है, ठीक है. और अगर कंपनी में काम कर रहे हैं और कोई नहीं देख रहे हैं, पर हमारे वो दिमाग में ऐसा है कि जो नियम है वो तो करना चाहिए, इसलिए जापान में लेजीनेस कम है. लेकिन ऐसा नहीं है कि लेजीनेस एग्जिस्ट नहीं करता. नहीं, एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन बहुत कम है. हाँ, तो अब मैं बात करती हूँ फॉरेनर्स वर्किंग इन जापान, ठीक है. तो पिछले 10 साल में विदेशी लोग जापान में काम करने, विदेशी लोग तो बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है. और इंडियन लोगों की बात करें तो ज़्यादा इंडियन लोग जो है जापान में एज अ हाई स्किल ऑफिस वर्कर काम कर रहे हैं. ज़्यादा लोग इंजीनियर्स होते हैं. और जितना मैं जानती हूँ 70% ऑफ इंडियन इंजीनियर्स डोंट स्पीक इतना ज़्यादा अच्छा सा जापानीज़, ठीक है. फिर भी जापान में काम कर सकते हैं, तो वो प्लस पॉइंट है, ठीक है. यूजुअली जापान में काम करने के लिए जापानीज़ स्किल तो चाहिए ही होता है, पर इंजीनियर्स आर एक्चुअली काइंड ऑफ ओके नॉट टू बी एबल टू स्पीक जापानीज़. मेरे कुछ इंडियन इंजीनियर्स जो है बहुत अच्छे से जापानीज़ बोल देते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं. लेकिन बिना जापानीज़ स्किल्स आप जापान में भी काम कर सकते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट है. और आजकल दूसरे कुछ वीज़ाज़ भी बहुत चल रहे हैं SSW करके. तो ये SSW जो है, चाहे इंजीनियर ना हो तो जापान में मतलब अलग तरीके के काम कर सकते हैं. एक तो बहुत है, लेकिन रेस्टोरेंट्स में काम करना भी एक है, और होटल में एक काम करना, या एज अ टैक्सी ड्राइवर भी है, या वो जो नर्सिंग जो ओल्ड जनरेशन्स को सपोर्ट करने वाला हॉस्पिटल में, या तो ऐसे होम्स में
ऐसे मतलब नर्सिंग मेडिकल केयर वर्कर्स ऐसा काम भी है। तो आजकल ना जो लेबर क्लास के लोगों को भी वीज़ाज़ मिल रहे हैं, बहुत तरह तरह के वीज़ाज़ इश्यू हो रहे हैं। तो अभी अगर लोगों को इच्छा है तो बहुत लोग जापान में आके काम कर सकते हैं। तो ये एक मुझे लगता है अच्छा सिस्टम अभी इस्टेब्लिश हो रहा है। लेकिन ऐसे एसएसडब्ल्यू के वर्कर्स को भी जापानीज स्किल्स पहले से थोड़ा सा चाहिए होता है। तो जितने मैं जानती हूँ इंडियन लोग जापान में कुछ जापानीज सीखते हैं, क्लासेस लेते हैं और एग्ज़ाम लेते हैं और फिर कंपनीज ढूंढते हैं और फिर जापान में काम करते हैं। तो अगर इस सिस्टम के बारे में ज़्यादा जानना हो तो यू कैन सर्च एसएसडब्ल्यू वीज़ा। और हाँ, जापान में जैसे कि मैं अगर कन्वीनियंस स्टोर में जाऊंगी ना, तो 60-70% टोक्यो में फॉरेनर्स ही काम करते हैं। आजकल तो जापानीज लोग बहुत कम है ना, जनसंख्या बहुत कम होती जा रही है। तो रेस्टोरेंट्स और कन्वीनियंस स्टोर्स, होटल्स में बहुत विदेशी लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे काम में इंटरेस्टेड हैं तो आप जापान में भी आ सकते हैं। तो तरह तरह के काम हैं। तो आप बताइए कि आप जापान में काम करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कौन से काम पे काम करना चाहते हैं? अरे स्टेरियोटाइप है, बिहार बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन लेबर लाइक वर्क साइट वर्कर्स। ये मुझे ना अभी पूरी तरह से समझ में नहीं है कि इंडिया के अंदर में भी तरह तरह के स्टेरियोटाइप हैं और अभी तक आई हैवंट एक्वायर्ड मच। तो इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगी। जापान के ऊपर आप अगर कमेंट है तो आप जवाब दूँगी। ठीक है दीदी, आपकी आवाज़ मायो जापान यूट्यूब के जैसी हैं। अच्छा, मायो जापान कौन है, बता दीजिए। Studying engineering, and there are mainly two professions with respect in India, doctors या engineers। अच्छा, इंजीनियर है तो जापान में काम करना बहुत ही आसान है, बहुत लोग हैं। There is something known as anime which taught me more Japanese than Duolingo. That's great. लेकिन मेरे बहुत विदेशी फ्रेंड्स हैं जो एनिमे जापानीज बोलते हैं। तो कभी कभी मुझे बहुत फ़नी लगता है कि एनिमे में बहुत रूड, मतलब पोलाइट, फॉर्मल नहीं है, बहुत ही कैजुअल है और अचानक से बहुत ऐसा वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जो यूजुअली जापानीज़ लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मेरे लिए बहुत फ़नी लगता है। तो एनिमे से जापानीज़ सीखना भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बाद थोड़ा बहुत फॉर्मल जापानीज़ भी सीख लीजिए, नहीं तो जापान में काम करना थोड़ा मुश्किल होगी, बिकॉज यू कांट बी रूड टू कस्टमर्स और योर बॉस। ठीक है। या हेलो रेंका सन, हेलो, हाउ आर यू? अगर जापानीज़ एनिमे से सीखना हो तो थोड़ा सा फॉर्मल जापानीज़ एनिमे देख लीजिए। पता नहीं कौन सा फॉर्मल है, लेकिन जो ऐसा एनिमे जिसके अंदर फॉर्मल जापानीज़ इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा एनिमे से जापानीज़ सीखना होगा, नहीं तो यू माइट साउंड वेरी रूड। हाँ, let me think about the Japanese anime in which you can actually learn good Japanese. Something about work. Oh, it's really hard. The dramas are okay, but at least you should watch the anime of, today. Like Dragon Ball की दुनिया तो थोड़ा मतलब पुराना भी पता हो सकता है ना. One Piece is also something, fantasy. But for example, Kimi no Na wa Your Name is about today. So I think you should learn Japanese from at least, the word is about today. So Kimi no Na wa is one thing. Weathering with You, those are okay. Don't learn Japanese from the fighting
shonen anime because they often use some strange word and then you don't want to kill your boss, right? So you don't have to know, I'm gonna kill you kind of Japanese. So pick the Japanese carefully if you want to learn Japanese from anime. जापान में रेसिज्म है इंडिया के अगेंस्ट. इंडिया के अगेंस्ट रेसिज्म नहीं है. और to be very frank, I don't think Japanese people are racist, but sometimes Japanese people's behavior can be seen as a racism because they think foreigners and they see foreigners in different eyes, and if Japanese people find some different cultures, then sometimes Japanese people are not ready to accept it. तो अगर let's say एक जापानीज़ को इंग्लिश नहीं आती है तो ये जो इंसान है फॉरेनर से बहुत डरता है. So sometimes maybe you don't sit next to the foreigner in the train because you don't want to put in a situation where you get asked English question and can't answer. So I think Japanese people are a lot very shy. So sometimes they avoid foreigners, but that's actually different from racism in my opinion. मुझे लगता है ये racism नहीं है, बस विदेशी लोगों से बात करना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं क्योंकि एक तो बहुत शाय है और इंग्लिश नहीं आती है. And there are some racism, racist everywhere. So there are some of the racist people in Japan as well. But in comparison, I don't think racism is a huge problem in Japan. It's better to learn Japanese with a professional. Yeah, if you can learn from books, then that's great. But कौन चाहता है किताब से जापानी सीखना? So I think it's nice to learn from anime. It just pick the anime carefully so that you don't accidentally learn anything inappropriate. दीदी आप BTS को जानती हो? जानती तो हूँ लेकिन इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ. If I talk, I don't know, Korean idols, I like Apatsu song. I think it has a good vibe. But usually I don't listen to Korean songs. I was joking about learning Japanese. Shift नहीं होना उधर. Wanna live rest of my life with मम्मा पापा एंड दीदी. अच्छा, वो तो अब बहुत अच्छी बात है लेकिन ट्रैवल तो कर सकते हैं ना, और एनिमे जापानीज़ में देखना भी अच्छा है. सो आई थिंक you can learn Japanese. You don't necessarily have to shift to Japan. So वो भी है ना. Yeah, so I have many Indian friends working in Japan, and some people are enjoying, some people learn Japanese, enjoy working, get a lot of actually money. So a lot of Indian engineers from big company in India, they make a lot of money. I'm telling you. Because कभी कभी मैं इंडियन परिवार के घर में बुलाई जाती है डिनर के पे, लंच पे, तो मुझे लगता है इन लोगों का घर जो है बहुत बड़ा है कंपेयर टू एवरेज जापानीज़ हाउसेस इन जापान, टोक्यो. तो मुझे लगता है मैं ऐसे सोच सकती हूँ कि वे लोग बहुत इतना ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं. सो इफ़ समवन हाई रैंक्ड पर्सन, engineer from India in big companies are shifted to Japan, then I think they get paid really well. And then वे लोग अपने बच्चों को इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में भेजते हैं, डालते हैं और पढ़ाई करवाते हैं. तो their kids also get great education. And खाना की बात करेंगे तो बहुत सारे इंडियन सुपरमार्केट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं. तो इतना मुश्किल नहीं है कि इंडियन खाना बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है. All the ingredients are here in Tokyo. और इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी खाना खा सकते हैं. तो अगर कुकिंग नहीं आता तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर जापानीज़ खाना खाना चाहते हैं और आप वेजिटेरियन हैं तो वो थोड़ा मुश्किल होगा. सो आई थिंक
some Indian people are a little bit stressed about finding good veggie food in Japan, but time के बाद मिल जाता है. So it's not that easy. All the ecosystems are here in India, in Japan, इंडियन लोगों के लिए. जापान में कैलकुलस किस एज में सिखाया जाता है, लाइक बेसिक्स. इंडिया के मतलब आई डोंट नो व्हाट्स द इंडियन average or basics of calculus, but I think calculus शुरू करते हैं I think 10 7 8 I think year old से, और बेसिक्स तो 2-3 साल में होता है ना. So I think it's not that different from India. Do you think it is hard getting a job which is connected to VTubing in Japan, like voice acting or production, etc.? If you are not the native Japanese speaker, then maybe it is difficult. But you can, as a VTuber or voice actor, you can get into the production as a foreigner, because right now there are many anime companies making some anime for Indian market or some other foreign markets, because Japanese population is shrinking, right? And people know that if you only stick to Japanese market, you won't be able to make enough money. So anime industry is also changing in a way that they are targeting foreign country as well. So if you speak good Japanese and English and some Indian languages, you can get some jobs. I know some Indian people working in Japanese anime companies. I also know some Indian students doing internship in Japanese anime industry. So there are positions. You just have to be lucky to get connected with those jobs, because everyone wants this kind of job, right? Everyone loves anime if you live in Japan. So I think you have to be active to find this kind of connection. Also be good at Japanese as well. The competition is very high, but there are many opportunities opening up for foreigners. My cousin runs a MNC, तो वो Japanese जाते रहते हैं. I think so. Packed food and authentic Japanese में कोई भी comparison है? Authentic Japanese में can you be more precise? What is packed food? 7-8 पे calculus मैंने 14 की पे सीखा था. 14 में तो advanced सिखाते हैं ना, I think. 14 is like grade 6-7, I think so. I think we might have different understanding of basics क्या है. दीदी अपने बिग 3 एनिमेस में से कौन से देखे हैं? What is big 3? Big 3? Big 3 you want to say? What is big 3 animes? You are right, it's competitive, got it. Yes, it's very competitive. Because a lot of Indian people want to work in Japanese anime industry. But let's say there are 10 Japanese companies who are targeting the Indian market and want to hire, Indian people. It will be only like 1 or maybe 2 or maybe 3 people in each company, right? You don't need a lot of Hindi speaking foreigner Indian people in each anime company. If they want some advisory in stories or language or some communication, it will be 1 person or 2 people or maximum 3 people. And not all companies are targeting India as a country. So let's say 10 companies and 2 people. So there are only 20 posts available. And सोचो जापान में कितने सारे इंडियन लोग हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं.
और इंडियन लोग जो इंडिया में रहते हैं और जापानीज एनिमे इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हैं. So the competition is very high. I suggest you to learn a brilliant Japanese and try to get connected. ठीक है. इंटीग्रेशन क्या होता है? I think I know what it means in Japanese. I just don't know in English. So let me Google integration. Integration is like math. 積分法 Okay. So this is, I think, high school 3rd grade. So 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, grade 12 is integration. Okay, I might have the difference in calculus as well. Wait. Calculus. Let me Google a calculus. I think I have different understanding. Calculus. Yeah. Oh, calculus is basic given. Okay, calculus. Sorry, calculus is taught on grade 12 as well. Sorry, I thought it's different thing. Okay. And do you think me कभी जापान में सक्सेस हो पाऊंगा? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ना. So if you keep practicing Japanese, learning, working hard, then of course जापान में successful हो पाएंगे. 12th grade or age. 12th grade is, I think, 17 or 16 in Japan. Yes. But not everyone learns calculus. If you choose the mathematics, science की तरह जाएंगे, so you have to learn the calculus. But if you go language, arts, then by the time you reach the calculus, you start skipping mathematics classes. क्योंकि यूनिवर्सिटी में इंटर करने के लिए ना, अगर मैथमेटिक्स साइंस की तरह नहीं जाएंगे तो यू डोंट हैव टू स्टडी सीरियसली. तो कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोग नहीं सीखते हैं. Me is preparing for N5 currently, learning from academy. If it goes well, I shall go to Japan for long study for 1 year and 9 months. So I would have to finish till N2 at least to get a good job. Gotta gambaru. Yes. Yeah, but congratulations first of all. I think it will go well if you work hard. तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए. And if you really want to get anime related job, then I think N1 is must. I know a few Indian people working in anime companies and they have N1. So I think N1 is a must. Because as I said, the job is competitive. So the more, the better Japanese you can speak, the possibility of getting that kind of job is higher. So I think you should aim N1 if you want to work in anime industry. ठीक है, but गंबाते, all the best. दीदी मेरा मतलब था कि अपने वन पीस, ब्लीच एंड नारुतो में से कौन से एनिमे. Okay, so I watched all but I didn't finish all. So तीनों बहुत लंबी कहानी है, so I haven't finished it. I mean, kahani bhi, when Naruto is finished, One Piece is not finished. But I watched thoda, so I get the gist of it. I was 12 years के बच्चों को ये जहर दिखा रहे हैं क्लास में. What do you mean? Okay. Anyway. But good to know. People are learning Japanese. Good. Also आजकल तो बहुत ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम भी चला है जापान में.
So if you really want to get anime related job, तो आप पहले थोड़ा इंडिया से भी काम आई थिंक कर सकते हैं. आजकल तो बहुत एनिमे कंपनीज जो इंडिया में भी जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं. सो मे बी यू कैन स्टार्ट विज फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम थोड़ा शुरू कर सकते हैं. शुरू में आप थोड़ा सा एज अ वॉलंटियर यू कैन वर्क एज वेल. तो क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं इंडिया में हैं जो एनिमे देख रहे हैं, एनिमे पसंद कर रहे हैं, एनिमे से संबंधित कुछ काम करना चाहते हैं. सो मे बी यू कैन ऑफर योर सेल्फ एज अ फ्री इंटर्नशिप of social media management to the Japanese companies. So you can post things on behalf of the company, and then if the company thinks that you're worthy, then you can ask for money as well. तो अगर मेरा ये मानना है, अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो फर्स्ट यू कैन गेट एक्सपीरियंस फॉर फ्री एज एन इंटर्नशिप, एंड देन यू इंक्रीज योर वर्थ as a job market, and then you can get the better job. अगर एक्सपीरियंस कोई एक्सपीरियंस ना हो, कोई कनेक्शंस ना हो, तो कॉम्पिटिटिव काम में जॉब लेना थोड़ा मुश्किल है. But if you start working as an internship, and you, even though if you are not getting paid, you work super hard and you get punctual, you do all the right things, then Japanese people value those punctuality, honesty, hardworking, keeping promise, being thorough. So you can easily get the job, I think. So if I were you, I would do that. I'll prove myself of my integrity, honesty, loyalty, punctuality, working, hard work, being thorough, and being polite, following rules, all those things I prove as an intern, and then I ask for the money. Then I'll get the experience and the good things on resume and prove my worth to the company, and then I get the job. That would be my strategy for competitive work, I would say. Oh, anyone got it? I wanted to get into more VTubing side in Japan rather than anime. Do you think having a VTuber track record can also act as a good portfolio to get into good connections in Japan? What exactly do you mean by VTuber track record? Like you being a YouTuber or VTuber production side? So that's a good question. Let me think. So there are many big Japanese companies in Japan. When I asked some of the big Japanese companies about entering Indian market, they said they are not yet ready to do that. Honestly, I'm talking about competitors, so maybe it's not great, but I'm being honest. They target more of US and like Taiwan, other Asian countries. So if you are Indian person, maybe as an English speaker, you can get a job in big Japanese VTubing companies, but being Indian person might not be as a good advantage as you might think, because they are not ready to enter Indian market. Indian market is still, very new to VTuber. So if you speak good Japanese and good English and have good business skill, then probably you can apply for the VTubing companies in Japan. So yeah, all the best. Being a former like Shinchan के grandpa is the best work. Money सब कुछ नहीं होता, satisfaction भी चाहिए होता है. Of course, I agree 100%. Money is not everything. You should have this sense of achievement, satisfaction. Only then you can enjoy the work and then your life. Yeah, आपका favorite color क्या है? Favorite color is red. My favorite is black. अच्छा, black is also good. But I like vivid color. Favorite color तो बहुत basic question है. What is your favorite color? VTuber track record as a me being a VTuber. So Instagram content creation and numbers matter. I think, yeah,
only having track record won't be as good. I think you should prove that you can gain some numbers, because yeah, I think that's more important. Oh, got it. Hello. Yes. तो मैंने थोड़ा देर से शुरू किया था, बट इट्स बीन आई थिंक मोर देन 40 मिनट्स. तो आज के लिए यहाँ पे ख़त्म करती हूँ. आपको कोई टॉपिक्स इन माइंड, कुछ टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं? सो एनी टॉपिक you have in your mind that I should talk about? If yes, then please comment. अभी भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे फिर बाद में हम कमेंट भी कर सकते हैं. तो आप ज़रूर बताइए कि आगे जाके कौन से टॉपिक के ऊपर मैं जवाब दूंगी. ठीक है. So thank you so much for joining, and it was fun talking to you. I'm so sorry again for being late. It won't happen again. तो फिर मिलते हैं. ठीक है. Bye.